So, hello everyone. We are back once again with a very, very powerful episode. This episode is going to be very different and very, very useful. ये हमारे काफ़ी मिथ तोड़ेगा। ये हमको ये बताएगा कि ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने एनवायरनमेंट को माँ और बच्चे के बीच या पेरेंट्स के बीच में कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं। वी हैव अ ब्यूटिफुल गेस्ट मिस मीनू भार्गवा जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं एंड ये पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। शी कम्स एंड शी क्रिएट्स ब्यूटिफुल वर्कशॉप्स फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स एंड फॉर चिल्ड्रन। When we were discussing with her, there were so many beautiful things she was discussing, that how we think it is right, but it leads to a different pathway which might not be right for kids, for parents, for teachers, for everyone. So मेरे मैं ज़रा कम बात करूँगी एंड आई वुड लाइक टू गिव द माइक टू मीनू जी एंड थोड़ा बहुत उनसे हम लोग बात करते हैं। कृति, would you like to add something here? I would just like to say welcome to the Fair Unfair Life podcast, Meenu ji. कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, ग्रेट। Meenu ji, you are sitting amongst us. You look like a very learned person. तो जिंदगी के इतने जो समय आपने निकाला है in gathering this experience, I would love to know what has been your journey. Yeah, so my journey, thank you, Kriti and Monica, first of all, for inviting me on your podcast. And Our pleasure. I'm very हमारा excited. Okay, so yeah, you have asked me about my journey. So, like my childhood, we were four sisters and one brother. And very authoritarian parents. I know, Kriti. Yeah, so very authoritarian parents who अच्छा। believed in discipline a lot. Yeah, but I found it very positive. If they have, in their upbringing, the children, they have taught us values, many values of hard work, of patience, of tolerance, persistence, all these things. Then I went to college, and after college, like when I was in college, my lecturer, I had home science with me, and I was studying child development. So my lecturer told me that my good neck in, psychology. I didn't have graduation, no psychology I had. Then because she said in graduation that you go for psychology, so in post graduation, I took psychology, and I did it from Jodhpur University. Okay. And yeah, I did well in my PG. And Wow. then, I did my diploma in guidance and counseling from NCRT Delhi. Wow. And then I joined government school as a counselor. Okay. 23 years I worked there as a counselor. But the job gets very monotonous after 23 years. You are doing the same kind of job. And then I was always working very hard, even as a counselor. So I used to invite people and organize career fairs and counseling camps in my school. So when speakers used to come with different topics, I was always very inspired by them. And then even when I was in school as a counselor, I was taking lot many trainings by department Mhm. and SCRT also. So, I somehow got inspired that I should go into trainings. Wow. And my son was settled. And so I thought, now I can take a chance, leave the government job. It has become pensionable also now. So I can take a chance because मुझे यही लगा कि जिंदगी एक बार मिली है दोबारा नहीं मिलेगी मिले ना मिले. So Hashtag I took a YOLO. decision. Yeah. And believe me, 2009, when I took VRS, there was a recession, big recession. Yeah, so parents were not able to pay fee and all. So when I went to schools, they would say, अभी तो हमारे पास, school के regular curriculum को run करने के लिए the money is not coming from parents. So this is luxury, giving them, this value education and all those things. So I didn't get work, honestly. Mm. It was a setback for me.
Yeah. because from hero to become a zero. Yeah. Yeah. And then, I joined again the school. I joined MIT International. 6 months, 3 years I worked there. But, my soul was never into becoming a counselor again in a school. It was always towards training. So 2012, I started my counseling center Okay. and a training center. And got lot of opportunities to work as a freelance trainer with Okay. various schools across India, and Uh-huh. not only schools, even colleges. Okay. Yeah. So that is how it was. It is very, very satisfying for me. Yeah. So So तो now ये I जो never regret that why I left the government job. It's always, like I'm very, very passionate about my trainings and about my learning also. तो ये ट्रेनिंग्स जो आप करते हो मीनू जी, ये किस प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं? और दर्शकों में बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ इनकी ट्रेनिंग के बारे में नहीं है। जब आप इसके अंदर घुसेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रेनिंग ही कंटेंट है इस एपिसोड का। यस मीनू जी, बताइए क्या करवाते हैं आप इस So ट्रेनिंग में? I do training with teachers. So what I teach teachers, because see, everybody nowadays need to upgrade themselves. If you ओके। don't update yourself, then you are outdated, and you will not survive in the market. So employability skills, all these have become very important. We are in the era of artificial intelligence, data science, driverless cars, driverless metros, Google Assistants, AI, all this. So teachers need to learn more and more digital tools and many new skills. So with teachers, I take 21st century skills, teaching pedagogies, classroom management, because these are digital kids all the time on the screen. So they are screenagers. And then, stress management, because teachers come under a lot of stress, with the work overload and the children who are so different now. So yes, and communication skills, which have become very, very important in 21st century. So I take such topics as ego management, stress management, वाओ! communication skills, ईगो then मैनेजमेंट, एक जगह मैं रोकना चाहूँगी। ये ईगो मैनेजमेंट में क्या आप बात करते हैं? दिस इज़ see, कई समथिंग बार टोटली। ना, हाँ, कई बार जो कुलीग्स होती हैं उन्हीं के साथ बहुत ईगो होती है. Like you don't know, that this particular problem I'm not able to handle, right? राइट। I should take help from someone, but then your ego comes. How can I know everything? How can I go to other person and say I don't know this? वाओ! Same is with the parents also. वहां पे भी एक पावर स्ट्रगल हो जाता है. Parents are blaming the teachers, teachers are blaming the parents. Then with the students also the same thing comes कि there is a power struggle in the classroom. बच्चा आजकल के बच्चे, the children of today, they will say मैम, मतलब मैम ने कुछ कहा क्लास में, तो they don't take it very positive. हाँ, And behind that also the parent is there, because parents have not shown that that respect for the teacher. They have not taught that too. So when teacher says something, in my time, parent would ask me, if teacher is punishing you, you have done something wrong, या right? आई थिंक सो वी हैव But गॉन द now, सेम। go on. parents will straight away come to the principal and say, your teacher has scolded my child, or your teacher hit me on the ear, on his ear, and so eardrum फट गया. आपकी टीचर ने मेरे बच्चे को मारा तो उसका स्टमक एक हो रहा है इतने. So some or the other excuse. So this is what is the scenario has changed. With the चेंज। students, if you talk, I take various topics from like value education to safe unsafe touch to sexual harassment and communication skills, facing exams, career counseling. So all these are my topics with the students. And if I come to parents, all schools tell me parental counseling is the need of the hour. वाओ! Why? Because nobody was born with, like our generation, never had this so much of technology.
Yeah. But these children are getting so much so soon. It is the time for information bombardment, right? And Google Baba Jindabad. So, there are so many things. Like nowadays, so much of memorization is not required. But parents अभी भी ना उसी मोड पे हैं कि if schools are going for experiential learning, they are not going Hmm. giving so much of homework and other things. So parents are the one who come and complain to teachers, आप लोग बच्चों को holistic development क्यों करा रहे Yeah. हो, हमें तो cognitive development से ही मतलब है, तो right? आपको लगता है पेरेंट्स ये इस जनरेशन के ये जो नए पेरेंट्स हैं ये इस बात पे बहस करते हैं कि बच्चों को होलिस्टिक क्यों ग्रो करवा रहे हो? हाँ, yes. It depends, Monica, which area. See, the educated parents will have different type of things, But राइट. जो रूरल एरिया के हैं, सेमी अर्बन एरिया के पेरेंट्स हैं, उनको अभी भी वही लगता है कि टीचर को खूब होमवर्क देना चाहिए बच्चों को. वो ये कहते हैं प्रोजेक्ट्स दे देती हैं टीचर, और हमें पता ही नहीं चलता, बच्चा कंप्यूटर पे बैठा रहता है. हमें कैसे समझ आए बच्चा क्या कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट Hmm. अप टू द मार्क ना, कि उनको पता हो कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, या वो बच्चों को गाइड कर सके. सो इस तरह के इश्यूज ना काफी आजकल आ रहे हैं. Um, देन यू सी, जब से ये पेंडेमिक आया था ना, उसके बाद से बच्चों की राइटिंग स्किल्स तो खत्म ही हो गई right. हैं. दैट टाइम चिल्ड्रन वर नॉट डूइंग सो मच. देखो क्लास में तो टीचर इज देयर, शी ट्राइज टू मेक देम राइट एंड ऑल, गिव्स होमवर्क एंड ऑल. उस समय द थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. So the changes have risen to different kind of problems. Yeah. Yeah. या कृति. I just wanted to say कि like my daughter when she started school, I sent her to a Cambridge board in Pune. Uh-huh. And वो experiential learning थी. So for me it was, as a parent, and I am still educated, Monica, right? But Hmm. still it was very hard for me to actually imagine कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं. It Hmm. made me very uncomfortable, so I said it's fine to be uncomfortable, but let me adjust. वो जो कर रहे हैं मैंने उनको trust किया actually उस process हाँ. में. And it really works very well. यहाँ पे मैं यूके में हूँ, तो यहाँ पे बहुत ट्रेनिंग पे फोकस है टीचर्स की, पेरेंट्स को भी Hmm. बहुत एंगेज करते हैं एंड ऑल दैट. सो इट्स रियली गुड टू नो कि देयर इज समबडी हु इज ड्राइविंग दैट काइंड ऑफ एफर्ट, एंड पीपल आर वार्मिंग अप कि यस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. That leads us to the next question, मीनू जी, बिकॉज आपने सही कहा कि आईक्यू के ऊपर तो बहुत फोकस है. एंड when it comes to India across the world is famous for our effort, like our hard work, our IQ. It is also इतना demonstrate भी हुआ है, हम इतने अच्छे अच्छे positions लेके पूरे world के across, Yes. हम Indians हैं. तो but I still feel कि वो जो एक emotional quotient है, to जी. understand, that does not exist. And I think that is what we want to understand from you. So tell us a little bit about emotional quotient. What is it and why is it important? Yeah, एब्सोल्युटली. sure. Kriti, the thing is, nowadays you'll find IIT students committing suicides. Yeah. So many suicides in IITs in India. Quota tutorials. Quota is a famous, for all these या. coaching for IITs and NEET and all that. So वहाँ पे भी बहुत सारे suicide होते हैं. So their IQ is not missing, but what is missing is EQ, emotional quotient. They एब्सोल्युटली. are not able to face the life when life gives challenges. They are not able to face the challenges, failures, I would say. So EQ जो होती है वो बहुत, it is a must, but people just look at IQ. What is EQ? EQ is the social and emotional competencies in a person. The ability to recognize, understand, and manage their emotions. Right? Like, self control. This is also part of EQ. Controlling your thoughts, controlling your feelings, all these comes managing your thoughts, managing your feelings, not only yours feeling, but understanding the feelings of others also.
Yeah, we call it empathy also, right? So understanding the feelings of other people also, their needs also, we try to understand. That is EQ. But nowadays, what do you see? Children are not able to control their anger. Hmm. They are not able to control their fear, right? Many more things, they are not able to handle the relationships. So this is why we say, why this is not there, because they are lacking in patience, in responsibility, in discipline, all these things. So EQ is about social skills. It is about emotional skills in a person, right? So अभी if इतने bullying cases हो रहे हैं, why? See, because you're not understanding what you're doing, what hurt you are giving to other person, right? Social media, so much of disrespectful language is there on the social media. People are not realizing that wound can be lifelong, what you are giving. So EQ is missing. मीनू जी, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इंसर्ट करना चाहूंगी Sure. कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एक या दो टिप आपके समझ में आती है कि ईक्यू डेवलप करने के लिए वो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? या सो बच्चों में ईक्यू क्यों नहीं आ रहा है आजकल? बिकॉज सबसे पहले तो ना इमोशनल बॉन्ड ही मिसिंग है पेरेंट्स के साथ बच्चों का। राइट। बच्चों को ना पेरेंट्स टाइम ही नहीं दे पा रहे, स्क्रीन से ग्लूड है। दे आर नॉट कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन इवन आफ्टर कमिंग बैक। सी दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 10 hours or so. When they come back, they don't have patience and tolerance to handle the child. राइट। Children learn what they live, you know. So parents are the role model for children. When they don't see their parents having that patience, tolerance, or acceptance, many things, so how will they learn all this? That's the question. So emotional quotient तो तभी आता है ना। आपने अभी, if I talk of years back, then what was there? Joint families were there. People were adjusting to each other. Children were seeing how they are respecting their elders, how they are celebrating any occasions. So there was lot of connectedness. In my time, हम लोग बैठ के, when we used to be on dining table, so 1 hour we would keep sitting and chat, right? बट आज क्या होता है, डाइनिंग टेबल पे भी इफ यू सी ना, 4 family members, everybody is busy with their own mobile phones, right? मीनू जी, आप तो मुझे टाइम ट्रैवल में ले गए। आई वाज, आपने जैसे ही बोला ना डिनर टेबल और मैं आई वाज विद माय फैमिली, कृति। आई वाज विद माय फादर, विद माय मदर, विद माय Right. ब्रदर। लाइक Mhm. टाइम ट्रैवल करा दिया इन्होंने तो। यस मीनू जी, सॉरी बिल्कुल। टू इंटरप्ट, प्लीज बताएं। है ना? नहीं, दैट्स ओके मोनिका। सो दिस इज व्हाट आई फील कि EQ जो है दैट इज मिसिंग, राइट? Why children are doing drink driving, or I would say eating junk foods, or you are hearing the cases of the child stabbing somebody, or acid attacks, or this and that, rape, violence, terrorism, because kahin na kahin their behavior is not responsible behavior, right? They are not being taught the life skills to lead the life successfully. It's not, education doesn't mean just information, giving facts to children and राइट। giving them in the exam and getting 88, 90, 98%. Life may, what will make the child happy is if he has those skills, how to face the life in a responsible way, healthy ways, right? So these life skills, which are about thinking skills, which are about cooperation, which are about effective communication, which is about controlling your emotions. So all these emotional social well-being tips, this also should be included in our curriculums, right? वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। यस प्रति, यू हैव अ तो क्वेश्चन? अगर
like mere, I have two children, Meenuji, and I have a hectic job. And everything that you said, ki when I get back home, sometimes, I feel so tired that I am not able to make myself sometimes emotionally तो भूल जाइए, physically भी available करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को, Hmm. right? But it's also a reality. I think we have to exist in this world. So Hmm. ऐसी कुछ tips हैं क्या that you can share with our users, like top 2 or 3 things that at हाँ. least छोटे से changes जो कि हम कर सकते हैं अपनी life में to make sure that we are helping develop their emotional quotient and also being emotionally aware of ourselves. Yeah. Listen, nowadays it is the time where, husbands need to be very cooperative in the family, right? And delegation of duties, another thing. No, a small child also can be given responsibilities. Hmm. Hmm. बट आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट्स बच्चे को जहां देखा ना, दे डोंट हैव टाइम, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं. बट आप ऐसी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो ना बच्चों को, कि गो एंड वाटर द प्लांट्स, या इफ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स इन योर हाउस, then you can give him the responsibility कि go and give them food or go and give them medicines, things like that. तो हमें कहीं ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सिखानी चाहिए. ये नहीं कि आपने एवरीथिंग यू डू फॉर देम, कि गिव देम इन अ प्लेटर एवरीथिंग, राइट? So they are not learning responsibility. At times it happens that child doesn't do homework at school, at home, and mother says कि कल डांट खाएगा ना बच्चा, तो इससे अच्छा है मैं उसका होमवर्क कर देती हूँ. Now the child gets the feeling कि मम्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है होमवर्क. She gets more anxious than me. You नहीं, know. आपने एक बात मीनू जी बिल्कुल सही बोली है ना. आई 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 कीप वॉचिंग, न्यू न्यू ममाज जो होते हैं, और वो अपने बच्चे को जब फीड करा रहे होते हैं, मतलब आप उसको कुछ स्पून से खिला रहे होते हैं. आई हैव सीन देम गिविंग देयर मोबाइल, इन चाइल्ड हैंड. Yes. वो बच्चा लेटा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है, और वो उससे जो भी आवाज आती है उसको अट्रैक्ट करती है, उसको अच्छा लगता है. और Hmm? माँ का काम हो जाता है कि बच्चे को पोषण पूरा मिल जाता है, बट उसको एक हैबिट हो जाती है उस फ़ोन के अंदर Yes. घुसे रहने की. आपने बिल्कुल पते की बात बोली है यहाँ पे मीनू जी. एंड कई Right. बार ना हम लोग गलती से कर देते हैं. हम लोग इतना ओवरडू प्यार का कर देते हैं कि वो बच्चा जो है शायद कहीं-कहीं हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है. क्योंकि गौतम Very बुद्ध ने true. बोला कि ज़हर क्या है? तो ज़हर वो हर चीज़ ज़हर है जो एक अधिक मात्रा में आप कंज़्यूम कर रहे हैं. तो Very शायद true. प्यार भी ज़हर ना बन जाता हो. आपकी बात से मुझे ये समझ आ रही है कि Yes. this is this is very beautiful what you just said, and it will be useful. See, Uh, parenting requires balance of discipline, of love. If anything is, in excess, as you said, right? You are compensating. You have become. See, parenting these days is being outsourced. Parent के पास टाइम नहीं है. right. So driver को दे दो. Driver is going to leave the child. Tutor is there to take care of his studies. The caretaker is there at home to look after. And TV has become a parent. The mobile phone is, they are spending more time with these gadgets than with their parents. So here lies the problem, right? Parents have to, not only Monica, I would say, they have used it for work, it is fine. But when they come home also now, it's just WhatsApp, chat, video, watching, all these things continue. They are not knowing their priorities, you know. Mm. Children need your presence more than your presence, right? Wow. And what you leave in children, I mean, what property and all that you're leaving for children, that is not so important. But she leaving values in children, Hmm. that will make them happy for their lives, right? Very beautiful. Very beautiful. We Yeah. get so much of comfort. Sorry.
हाँ कृति प्लीज कंटिन्यू. छोटी सी चीज आई वुड लाइक टू से, तो मतलब वन इज मीनू जी, आई एम लिसनिंग विद ऑल ईयर्स, आई एम आल्सो ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट कि मेरे बिहेवियर्स कैसे हैं घर में. कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मैं करती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खाना बना रही हूँ और हमारे मेरे किचन और डाइनिंग टेबल के बीच में एक बस वॉल है, तो मेरे हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे होंगे, बच्चे कुछ इधर उधर होते हैं, सब लोग साथ में नहीं खा पाते हैं कभी कभी. सो देन आई विल कॉल देम, आई विल से पापा को खाना दे के आओ. Mhm. प्लेट लगा है, या प्लेट भी समटाइम्स उनको बोलती हूँ लगाओ, बट ऐसा नहीं है कि मैं जाके नहीं दे सकती, यू नो, राइट. Uh, right. but I try to involve them. So I think these are the small things where they feel like they have responsibility. आप Yes. Kriti, that even reminds me, and exactly, I was also reflecting because I have also worked in corporate for 27 years, and मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता था घर पे आना. और मेरे एक बेटे हैं, तो उनका नाम सोम है. उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज बॉम्बे में रहती हूँ मैं. हम लोग को ट्रैवल में ही 3 घंटे से 4 घंटे लग जाते हैं आने जाने में. तो जब तक मैं आती थी, या तो उनके सोने का टाइम हो जाता था, या तो फिर समय नहीं मिल पाता था, उनके खेलने का टाइम होता था. पर जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने देखा कि मैं ज़्यादा क्वालिटी टाइम उनके साथ बिता पा रही हूँ. आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ माई चाइल्ड, क्योंकि वो तो मुझे समझता ही था. बट मुझे ये समझ में आया व्हेन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हिम, देयर वर सो मेनी थिंग्स आई वाज अनअवेयर कि उसके साथ स्कूल में कितनी तकलीफें थी, क्या चैलेंजेस थे, यू नो. कैसे उसने फाइट किया वो सारे स्ट्रगल्स अपने, जो वो महसूस करता था, बिकॉज वो ओबीज थे, कैसे लोग उनको बुली करते थे. मैं आज सुनती हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि वेयर वाज आई, मतलब वेयर व्हाट वाज आई डूइंग एट दैट टाइम. और इन्वॉल्वमेंट, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम लोग जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, हम लोग बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं कि हम तो नहीं कर पा रहे, तो हम एक प्रेजेंट लेके आ Right. गए, यू नो, वी विल गिव देम समथिंग Hmm. मटेरियलिस्टिक. Definitely. और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं डेफिनेटली. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा सैटरडे संडे छुट्टी है तो मेरा बच्चा बिल्कुल आराम करे. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू कम फ्रॉम दैट थॉट Hmm. प्रोसेस. तो मेरे हस्बैंड जब हम लोग पेट लेके आए, तो माय हस्बैंड स्टार्टेड सेइंग कि अब सोम को मेरे साथ वॉक पे चलना चाहिए. एंड मैं खुश नहीं थी उस बात से कि बच्चे को आराम करने दो ना, व्हाई यू आर ड्रैगिंग हिम, Hmm. तुम जाओ. एंड संजोग ने बोला नहीं नहीं, उसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. एंड आई कैन वाउच फॉर इट, आई सी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर इन सो. Yes. जिस तरीके से वो जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, the connect between him and Sanjog has improved. The connect between his own circle has started looking up to him कि responsible हो गया बच्चा. तो आपने बड़ी उचित बात बोली. And बड़े with heavy heart I have to say my husband is right. Yeah. मैं बता रही हूँ, so I'll send this episode specifically to her. मुझे ये यही लगता बच्चा है छोटी सी चीज है, बच्चों को कहो डाइनिंग टेबल लेकर, जी they are learning responsibility, दयाल है. right? When my son used to be like 9 year, 10 year, I used to go by scooty to school. So I would say, Beta, my scooty has to be cleaned by you, because when I go to school and tell my friends that my son does all this, they appreciate you like anything. So double encouragement ke saath he would again do it. And similarly, when I remember very well, he was 2 year old. And he used to play with toys. I had given him a mat and tub. All the toys have to be kept in here. So by chance, some other friends of him came and they are throwing things here and there. He would say, before going home, you have to keep all these things in this tub. He would not allow them to go home. So that is how children learn responsibility. And Beautiful. this responsible behavior will stay with them even when they become an adult. But if we are not teaching them responsibility, we are just thinking, उसको आज संडे है तो आराम करने दो. No. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. बिल्कुल. हम इनफैक्ट मैंने देखा है कि सोम को ही हैज स्टार्टेड कैंसलिंग हिज प्रोग्राम्स
बिकॉज बाबा को तकलीफ ना हो जाए, बाबा अकेले कैसे जाएंगे। ये लैकिंग था उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। वो अपना पूरा वैसे ही एनवायरनमेंट भी एडजस्ट करता है, वो जाता है नहीं जाता है, दैट इज हिज कॉल। बट यस, यू आर सो राइट। आप मीनू जी, आप शेयर करी थी एक 3 टिप्स। तो एक तो आपने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देनी है ना? दूसरा आई थिंक कि पेरेंट्स का अपना बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट इन द हाउस। Very एंड व्हाट इज द important. थर्ड टिप? Third tip, I would say, spend time with children. That is very, very important. वेरी You know, इंपॉर्टेंट। as I said, children need they have got so much emotional turmoil also inside. बहुत कुछ, कई बार आप देखोगे बच्चे, because they are not able to share with their parents, and all those emotions go deep inside, and then their mental health suffers later on. I have सो seen कैसे हम cases. टच इन कर सकते हैं? लाइक द अदर डे, जैसे जनरली मेरे बच्चे आते हैं तो आई यूज्ड टू आस्क देम हाउ वाज योर डे, तो कभी तो Hmm. जवाब मिलेगा, कभी नहीं भी मिलता है। सो देयर वाज दिस इंटरेस्टिंग सा रील जो मैंने देखा, और उसमें वो बता रहे थे कि आप ऐसे पूछिए व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे, व्हाट डू यू थिंक यू कुड हैव डन बेटर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं क्या जो कि व्हिच कैन हेल्प चिल्ड्रन ओपन अप, बिकॉज़ उनको आदत Yes. नहीं है Uh-huh. इतना एंगेज करने Yes. की। See, generally what happens, parents, the child will come home, उसका बैग देखेंगे, and then they will say कि कोई होमवर्क। आज रिजल्ट वगैरह मिला है, कुछ कॉपीज वगैरह के मार्क्स वगैरह, all that. But you should, not the marks are important, but child is important. So हम्म। you ask the child, how was your day? Everything was fine, right? Today, parents need a lot of patience, which is missing. नहीं कर पाते, वो उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है. That is the thing which is, hurting children a lot, हम्म। right? So that is what I want parents ki spend some time, then you will understand the needs of the child, what he wants to do in life, how he wants to lead his life. All those things are important. Sit with him. They'll impose their decisions on children. Go for skating, now go for dance आई class. नो। Go for, he doesn't get time at all after coming back. See, children come back nowadays from school around 3:34, because सब या बच्चे बस में travel करते हैं, school is far, and then after that ना 4 o'clock बच्चा आया, अभी nobody is there, servant is there at home, or they go to crèche, daycare center, whatever. And then after, parents को लगता है we are not at home, now let the child go to some classes. So he will go to one class, he will come back when they from their second class, third class. So what are you doing with the child? You know? मैम बिल्कुल एक सही। क्वेश्चन पूछूंगी, बिकॉज आई I have seen a lot of women now giving up very successful careers to actually be with their Hmm. children as well. And I mean, I personally rate it very high in regard because शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी, right? So I am, for me, it's like something that is absolutely ultimate. And I just wanted to pick your head. Ki, what is your perspective on, should parents do that? Does a mother leaving her job, or a father for that matter, one of the parents being available for their children, is that any way better? Or what would you See, like to if say? your job is too taxing, Hmm. actually you are not able to give a time at all. वो आप बैलेंस ला ही नहीं पा रहे हो फैमिली में. तो व्हाट इज बेटर कि बच्चा, मदर फादर का डेली कॉन्फ्लिक्ट हो, बच्चे के सामने वो कॉन्फ्लिक्ट हो. विल दैट वर्क इन द, you are earning the money for whom? For your child, for your राइट। family, but then you are losing everything. Then does it make a sense? So I'm not saying leave the job. What I'm saying is try to get that balance at home. You have to get yourself very organized. Family में father and mother दोनों को equal role play करना पड़ेगा, because it's not like that कि okay, she's a female, तो workload, she will only manage everything. No, Yeah. then the family cannot run. But if you can bring that balance in the family, all three or four,
deciding on how to run a family the better way. Even the child, see, can explain to the child that, look, we are both earning, doing a very hard work. Why we are doing it? Because we want to give you good education. Hmm. We want to give you good lifestyle and everything. So that is why we have to do all this. But then you have to take responsibility also to help us in whatever way you can. Mm. And when mama comes back, then you have to see that you have done your homework and this and that. You can spend so that she can spend some time with you, right? Yeah, So if you explain to each other the things work better, yeah, Hmm. I right? agree. और बहुत एक और सवाल है, सो जस्ट रीसेंट अनाउंसमेंट, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस हाँ, किया कि दे आर बैनिंग all मोबाइल। teen accounts on social media. Where I live in the UK, there are a lot of schools that have banned mobile phones usage completely in the school. Like they're not even allowed to take them in. Yes. They are moving away from technology a little bit. And apne, at the start of the episode, you referred to a lot of phone usage and how it is getting embedded as part of our life. So very interested to understand what's your perspective on phone usage. Should we ban phone? Should we ban social media? Or should we learn to live with this? See, social media ban is coming in various countries. Singapore also recently Mm, did that. Because, children's mental health is suffering nowadays. Whatever problems children had, it has been amplified by social media. True. How? This disrespectful language, again, the mental health issue. Or they don't have a track of time. They are sitting with their mobile phones or busy with the gaming. They lose. Then scientists say so that giving mobile phones for a very long time to children is like giving narcotics. Why? mm, Because the chemical changes are the same as in the drugs. yeah, Yeah, so it is better the child should be engaged in physical activities and non IT tasks. Let him play some indoor games, let him get involved in art and craft, or maybe dance or music or things like that. But क्या हो रहा है, पेरेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग द इजी वे कि बच्चे को मोबाइल दे दिया ना, अब ना उसका डांस हॉबीज डेवलप ही नहीं हो रही हैं बच्चों की। या तो बहुत सारी क्लासों में भेज दो और या मोबाइल फोन पकड़ा दो। mm, सो दीज, तो बच्चों की ना मेंटल हेल्थ व्हाई इट इज बीइंग सफर। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी सो मच, या, बट यूजर कैसे यूज करता है। Hmm. आप वाटर फिल्टर करके पीते हो ना, आप गंदा पानी तो नहीं पीते। सो सेम वे व्हाट यू टेक फ्रॉम दैट सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। yeah, बट आजकल बच्चे कंटेंट इनअप्रोप्रिएट वाला देख रहे हैं और टाइम की लिमिट को फॉलो नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर इज नो सुपरविजन। mm, पेरेंट हो घर में, दे कैन सुपरवाइज कि बच्चा 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखे, स्ट्रिक्ट रहे उस पे। पर पेरेंट होते नहीं है, केयर टेकर है, केयर टेकर खुद वीडियो देखने में लगा हुआ है, तो बच्चा तो उससे क्या। मेनी टाइम्स देर इज अ कंप्लेन फ्रॉम स्कूल, चाइल्ड इज यूजिंग द अब्यूसिव लैंग्वेज। Hmm. ही इज लर्निंग फ्रॉम वेयर? केयर टेकर्स हैं घर में, उस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, खुद अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, द चाइल्ड इज स्पीकिंग फ्रॉम देयर। तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसा है, वैलिडेशन, चिल्ड्रन आर नॉट कॉन्फिडेंट, दूसरे ने मेरे बारे में क्या लिखा है उससे दे गेट अफेक्टेड, mm, Affected, yeah. छोटे छोटे राइट? बच्चे मैंने देखा है, they get affected, yeah. एड्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, उसमें वायलेंस दिखा रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज दिखा रहे हैं, दे आर पिकिंग ऑल दैट। चिल्ड्रन फॉलो कि बॉडी इमेज, उसके जैसी बॉडी फिगर होनी चाहिए, ऑल दैट, एंड बॉडी शेमिंग एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम सो कॉमन। yeah. जंक फूड, eating all those things because ad है उसके इतने attractive and all that. Meenu So ji, what you're I'm trying to say is, 100% right, because I think Monica Rudra ke saath, we also unpacked this in one of our previous episodes. Yeah. He's a teenager and he talked about, there's so much cringe content. He explained cringe as well.
And he was himself saying that social media gets to them like anything. So if our listeners want to listen to that episode as well, we'll try to link it to our today's podcast, because it might be a very good listen for anybody trying to understand जो मीनू जी आज हमसे शेयर कर रही हैं, her perspective on building emotional intelligence, building better relationships within the family. Children, they learn a lot from their parents. um, and we cannot stress this enough. So अगर आप एज अ पेरेंट सुन रहे हैं, या अगर आप एज अ किड भी सुन रहे हैं, एज अ टीनेजर सुन रहे हैं, जाके अपने पेरेंट्स को बोलिए कि we need some better rules in our house. I need you to be there with me. You can absolutely demand that. Or agar aap parents hain, to please, I'm sure you've taken some really great learnings today from Meenu ji, sharing her tips and expressing her very, very valuable, insights on this topic. So thank you, Meenu ji. Thank Thank I think हमें वापस आना ही पड़ेगा, Monica. So you. यस, let's और Thank you, मैं Monica. बस बिल्कुल इनको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे सवाल बहुत सारे बचे हैं, और आई एम श्योर कृति के पास भी बहुत पेट में कुछ दर्द होने वाला है आज है। तेरे. मैं सारे दर्शकों से ये बोलना चाहूंगी, और जो मुझे समझ में आया मीनू जी से बात करके, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्यार हमारे जो दुलारे बच्चे हैं उनको बर्बाद ना कर दे, या उनको तैयारी में शायद कहीं ज़िंदगी की जिद्दोजहद में हम उनको तैयार ही ना कर पाएँ कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे आगे जिएँ और कैसे खूबसूरती से जिएँ। देखिए, पैसे तो सभी कमा लेते हैं, बट जैसे मीनू जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, आईआईटीएन मतलब बड़ा ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है आईआईटी, एंड बड़े ही दिमाग वाले व्यक्ति वहाँ जाते हैं, पर तो भी वो बाध्य हो जाते हैं अपने जीवन से जीवन गंवाने पे। तो इमोशन कोशेंट एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है आप सभी का और हम सभी का। और मीनू जी से हम अगले एपिसोड में ये बिल्कुल सीखना चाहेंगे कि हम और कैसे अपने इमोशनल कोशेंट को डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच मीनू जी फॉर Thank you. ट्रस्टिंग अस एंड बीइंग हियर एंड शेयरिंग सच ब्यूटीफुल थॉट्स। एंड कृतिक, तुम्हें कुछ बताना है कि हम लोग No, I यहाँ think पे we should give Meenu ji an opportunity to say anything she'd like to tell our listeners, जो कि उनके मन में था और शायद हम नहीं अभी तक डिस्कवर कर नहीं, पाए. नहीं, ऐसा नहीं है, आपने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी. Yeah, so I think I've already given my tips to parents, right? And we should just conclude with this. Thank Yeah. you, So Meenu ji. Meenu ji, please tell us the name of your firm. Yeah, Um, it's Karan Consultants. It is Amazing. in Gurugram, Sector 51, Orchid Island. Yeah. We are into individual counseling, group counseling, and trainings for schools, for colleges, with the students, teachers, and parents. We are also running life skill courses of 10 days. We are also having career exploration programs for kids, and also into psychological assessments for career choices, stream selections, all these things. So thank you so much, Meenu ji, for sharing this space with us. As usual, my Saturday morning has been a very productive morning, and I'm just super happy, all set for the amazing weekend. Trying to keep the learnings in mind, जो कि आज हमने शेयर करी है. थोड़ा और जाती हूँ, थोड़ा बच्चों के पीछे और पढ़ती हूँ, उनसे काम करवाती हूँ सारा घर का. But thank you so much. And just a final note to our listeners, that if you did enjoy today's podcast, please do like, share, subscribe. Our endeavor is that अगर आज की स्टोरी ने आपको हेल्प किया और आप एक और पर्सन को हेल्प कर पाए अपने शेयर से, so I think that will really make us proud. It will feel like that we've achieved something, a positive difference in the world. And that's the reason Monica and I and our esteemed guests show up every week to support you with. So thank you so much.
और Thank लाइक, शेयर, you, सब्सक्राइब करें। Kriti. Thank you, Monica. And thank you, my lovely, lovely audience. Thank you Thank so you. much.